Tan fell in love with Trip Machine, so I planned a little surprise for her. Hello guys! So today we have something special for you. We are going to do a review for our Trip Machine products. Woo! So this is a tank pouch and that is a saddle bag, or some people even call it side pannier bag. We like to call it saddle bag. So let's start with this tank pouch, Zadira. Tan fell in love with Trip Machine, so I planned a little surprise for her. Already we had a very dull pandemic quarantine situation, so I just wanted to brighten her birthday up with this baby. So I had ordered for this tank pouch about just 4 days ago. So I spoke to Pamela from Trip Machine and I requested that it was Tan's birthday, and I really wanted the product delivered before that. And I know it was a pandemic situation and deliveries were getting delayed, but Pamela was so sweet. She made sure that the product would get delivered soon and it came before her birthday, so we're really grateful for that. And this bad boy won Tanu's heart. This has 6 magnets at the back. If you see these are all magnets. 1, 2, 3 on this side, 1, 2, 3 on this side. And here there's a branding that says handmade, because this is actually handmade. Right, Zadira? Right. And then this thing is something you can just slip onto your belt here. Zadira has a belt, so Let me show you, you know. yeah. So you take it through your belt, just like that. You want to zoom in and show? So I have taken it through my belt, and now I just ta-da! So that is how what the look is finally when you put it on. Once you're on the bike, you can just remove it and it just sticks onto your bike like that. It's as simple as that. Now Zadira will show you what it fits and who it's really for, because this is not for those adventure riders. This is not for you if you own a BMW and go on those hardcore riding trips. All Trip Machine products are made for a certain kind of riders who like it retro and old school. I love that series, what's in my bag. So what's in my tank pouch? So this one, usually we also keep our phone, but we're using that phone to record. Yeah. Apart from the phone, we keep our mask or bandana. We keep our sunglasses, and we keep our wallet. Yes. And even after putting all these things, there's still room for like a pen or some handkerchiefs, Or even bike papers. bike papers, or tissues if you like to carry them, sanitizer. This is very high quality leather, and this bit, this black bit that you see, is the same material they use to make the saddle of horses. So if you ever done horse riding, you would know it's the same material, and it's extremely rough and tough, right? Yeah. We have been using it for a while now. I got it way back during my birthday, but we didn't have the bike then. But But we were still wearing it yeah, we were still wearing it on a belt and all, and now we have been using it a lot. a lot. Yeah, it's our go-to thing because It fits so much and it's compact. So इसमें टूटने का बिल्कुल भी डर नहीं है, because it is not flimsy. Yeah. It is hard. it is like, it's really hard. Yeah. It even takes a lot of pressure to dent. Yeah. So if you see, it won't dent so easily. Yeah, it's hard leather. It's not really soft leather. Yeah. So do you see these flaps? These flaps are there on both sides so that They prevent things from falling. exactly. So कभी कभी ये बंद होता, यहाँ अगर gap रहता, तो if you put keys or coins or cash, it may fall out. But they have taken very good care of everything. Just one feedback about this product: this thing that you see, It doesn't clip on very easy. to clip onto your belt. It doesn't really clip on very easily, and it takes a lot of time and effort, and that shouldn't be the case, because you should just be able to clip it on and clip it off and put it on your tank. It should be as easy as that. Anyway, moving on to our next product. We have spoken about that tank pouch, and now we're going to speak about this beauty right here. So now we're going to talk about this Trip Machine saddle bag. So first thing you will see over here, there's a Trip Machine branding. ये भी actually leather है. Then you will see this strap. Then you have a few D-rings, and then more leather over here. So these are to fasten any extra straps that you might have. Like here, ये हमारा extra हो रहा था, तो हमने इसको यहाँ पे डाल दिया है so that it doesn't get stuck in the wheel.
Now I will show you how the bag actually comes. मैं आपको एक साइड का खोल के दिखा रही हूँ. ये जो पूरा स्ट्रैप है, ये पूरा स्ट्रैप ये ऐसे आता है. और दिस थिंग दैट यू सी, ये आपको तब लगाना है जब आप इसको अपने बाइक पे माउंट कर रहे हो. अगर आपको बैग सिर्फ अपने शोल्डर पे पहनना है तो यहाँ साइड की तरफ ये बकल दिया हुआ है, उसमें घुसाओ. जैसे आप अपना नॉर्मल बेल्ट लगाते हो, सेम मैकेनिज़्म है. इसको लगाओ. यहाँ हमारा एक्स्ट्रा स्ट्रैप बच रहा है, करेक्ट, जो डेंजरस हो सकता है अगर हम ड्राइव कर रहे हैं तो, इसलिए उन्होंने ये सब दिया है. यहाँ पे घुसा दो एंड यू सॉर्टेड. अब ये मैं कैरी कर सकती हूँ ऐसे. सेम मैकेनिज़्म फॉर द अदर स्ट्रैप. अब अगर मुझे इसको बाइक पे लगाना है, जैसे कि हमने इस स्ट्रैप में किया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, ये हमने पहना हुआ था, अब इसको हम कुछ ऐसे फोल्ड करके इसके अंदर डाल देंगे. इसको अंदर बस स्टफ़ कर देना है. और यहाँ ये बकल है विद द बटन्स. दीज आर नॉट हार्ड टू क्लिप ऑन, दीज आर वेरी ईजी. ये हो गया. अब इसको आप सीधा यहाँ माउंट कर सकते हो. अब माउंटिंग कैसे करना है वो हम बताते हैं. सो दीज बैग्स कम विथ 2 सेट ऑफ माउंट्स. ये दोनों जो है ये छोटे वाले माउंट्स हैं, दोनों सेम साइज़ के, आप देख सकते हो. एंड बाय द वे दे हैव चेंज दिस. पहले ये इतना हैवी नहीं होता था, अब इन्होंने नया भेजा है मुझे, जो काफ़ी स्टडी है और ये कुछ गिरने या टूटने का चांस नहीं है. दूसरा जो सेट ऑफ माउंट्स होता है वो ये लंबा वाला होता है. सो अब क्योंकि जावा के लिए सैडल स्टे बनता नहीं है, ये हमने एक बाय फ्लूक अच्छा उपाय ढूंढ लिया है. ये है हमारा छोटा माउंट, ये है हमारा बड़ा माउंट. एक छोटा एक बड़ा. अब छोटे माउंट को हम क्या करते हैं, छोटा वाला माउंट हम ऐसे डालते हैं एंड दिस इज़ बेसिकली जस्ट अ सिंपल डॉग लूप. बस इसको आप खींच लो थोड़ा, ये टाइट हो गया है. अब बड़ा वाला माउंट हम यहाँ पे डालते हैं. अगेन जस्ट अ सिंपल डॉग लूप. डन. ये हमारे दोनों माउंट्स लग गए. अब इसको माउंट करने के लिए यहाँ पीछे 2 पेयर ऑफ डी रिंग्स दे गए हैं, एक यहाँ बीच में और एक यहाँ ऊपर. अगर आपकी बाइक थोड़ी टॉल है लाइक द इंटरसेप्टर, देन यू कैन ट्राई टू लूप इट ऑन टॉप. बट हमारी बाइक क्योंकि लो है, हम लोग इसको बीच में माउंट करते हैं ताकि ये साइलेंसर में टच ना हो. तो ये रहा बीच वाला, हमने इसमें लगाया. लेट्स एज यू कैन सी बैग माउंट होने के बाद कुछ ऐसा दिखता है. और बिकॉज ऑफ द सारी गार्ड ओवर हियर, ये व्हील्स में भी टच नहीं होता. और नीचे भी एज यू कैन सी काफ़ी गैप है, साइलेंसर में कुछ टच नहीं हो रहा है. And as a pillion also, it's absolutely no discomfort for me to sit. Let me show you. So as you can see, this is my sitting position. And like I said, this is absolutely no hindrance. And अगर आपने हमारा Decathlon video देखा है, and if you haven't, go check it out now. आपको पता होगा कि हमने इतनी सारी शॉपिंग की थी. हमने 2 बॉटल्स कैरी किए थे और हमने बहुत सारी और भी चीज़ें कैरी की थी रिलेटेड टू आवर कैमराज एंड अदर थिंग्स. एंड सब कुछ इस सैडल बैग में फिट हो गया था. And even now हमने 20 to 30 pair of clothes इसमें डाले हैं just to show you the look of it after it's all stuffed up. And even now there's so much more room in it because it's a roll top, so you can keep stuffing in things and then roll it back and clip it on. Now let me show you what is the benefit of having a roll top. Come on. So as you can see, there's so much more room in it. You can stuff in more stuff in it. Come have a look inside. You can stuff in more things and all you have to do is just roll it back. Let me fasten it and show you. Ta-da! And together we decided what color we wanted. And since we had a Haley steel, we thought tobacco brown would look just perfect with it. Yep. No? Yep. And Tanu and I both fell in love with it. एंड बाई चांस ऐसा हो गया कि सीट ऑल्सो इज़ रियली कॉम्प्लीमेंटिंग द होल सेटअप. बाइक का कलर, हमारे टैंक पाउच सैडल बैग का कलर और सीट का कलर मज़ेदार हो गया है. एंड इवन द हैंडल बार ग्रिप्स विच वी शोड यू इन द लोनावला वीडियो, वी कैन गिव यू अ ग्लिम्स ऑफ इट अगेन. So that is also tobacco brown. With all Drip Machine products, the good thing is as they age,
They age only look yeah. better. They age like wine sort of. They get better and better. And if you're one of those people who like the rustic, raw look, Rugged. yeah, rugged look, then these are the products for you. These are meant for rough and tough use. So you can be a biker in style. Yep. And I would like to give you guys some disclaimers. These products are not cheap by any means. आप प्राइसेस इनके जो भी हैं ट्रिप मशीन की वेबसाइट पर जाके देख सकते हो. हम यहाँ पे लिंक डाल देंगे. ये जो हमने टैंक पाउच लिया है, इस अमाउंट में आपको एक फुल फ्लेजेड बड़ा साइज का टैंक बैग आ सकता है जिसको आप बड़े ट्रिप्स के लिए यूज कर सकते हो. एट द कॉस्ट ऑफ दिस सैडल बैग विल गेट यू अ गुड सॉफ्ट लगेज फॉर अ लॉन्ग ट्रिप. सो नाउ यू मे आस्क व्हाई शुड वी बाय ट्रिप मशीन. तनु, you wanna tell? Yeah, sure. So trip machine, like I said, is for people who love it old school. अगर आपके पास इतना बजट है कि आप सिटी के लिए अलग सेटअप रख सकते हो और हाईवे के लिए अलग सेटअप रख सकते हो, then this is the product for you. Although we took the tank pouch to Lonavala, बट हमने सैडल बैग नहीं लिया था बिकॉज इंस्टेड ऑफ दैट हमने टॉप टॉप बॉक्स बॉक्स लगाया था. बट सैडल बैग हमने हेविली यूज़ किया है फॉर गोइंग टू प्लेसेस लाइक थाने. लाइक वी सेड डिकैथलॉन गए थे और वापस आते टाइम आई थिंक वी फिल्ड इट मोर देन इट्स कैपेसिटी. दैट्स व्हाट आई फील. बट फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ. द स्ट्रैप्स डिडंट break or anything. But like I said, these are not meant to go on highway or to go on long trips. तो अगर आपको उसके लिए चाहिए, so we are giving you a disclaimer. Please don't buy this. If you just want to use it to go to office, to come back to office, go grab your beer or vegetables from the market, then these are the perfect products for you. Look how beautiful it makes your bike look. So if you really want that oomph factor, go for Trip Machine. Right? Yep. Bye-bye. Bye-bye. Jeez, I'm sweating so much. This one's a little hard. One eternity later.